Hey guys, very good morning to you all. I hope you are doing well. Okay, so yesterday we have started with the unit, right? That is heredity and evolution. So we have seen the introduction of it. So what is heredity and what is evolution? If you have not seen, so do go and watch the previous video of the introduction. Okay, so here, as you know, we have started with the 9th chapter of NCERT syllabus, right? So here, what do you mean by heredity? Just let's have a recall of it. So मतलब यहाँ heredity का meaning क्या है वो और एक बार देख लेंगे हम. So heredity is nothing but it is the what you say, like passing of characters from parents to the offspring or transfer of characters from parents to offsprings. यहाँ पर parents is like our parents, okay. Offsprings means we, okay, the childrens of them. So like that. So here, as you see, I have taken a textbook itself, so that page, by saying that I can explain you line by line. Okay, so I hope you will understand this. So now let's see the first point here. We have seen that reproductive process gives rise to a new individual that is similar but substantially different. We have discussed how some amount of variation is produced even during asexual reproduction. So here basically you should be knowing what is sexual and what is asexual reproduction. So here sexual reproduction means two parents are required, okay, a male and a female, you can say like that. And in asexual reproduction it can be like there is no requirement of a parent, you can say. Example I can give you is, if there is an amoeba, okay, amoeba will be always irregular in shape, right? It doesn't have any shape. So if this is a parent here, so if it want to reproduce asexually reproduction here, so what will happen, it will divide such that when it give rise to the two amoebas here which are identical, means what's happening here, only one single parent is involved in the reproduction. So this is asexual reproduction. And when we talk about sexual reproduction, you will understand how it is. Like imagine this is okay, let me give it like this. So this is A, this is B, or else you can say this is mother and this is father, if you are considering it like this. Okay, so one character will be passed from here, few characters will be passed from here, and finally the young one is there. Okay, so I'm giving it as, okay, I'll mention like this. Now what do you understand this? So here when your mom and when your dad, both characters are passed, only then you are born. So that is sexual reproduction where two parents are involved, right? So this is what I'm trying to explain you. Now here, according to the lines what we have seen so far over here, what they are saying is reproductive process will give rise to new individuals which are having similar or what to say, partially different characters, you can say. Like what is partially different characters, यहाँ पर क्या कहा जा रहा है एक्चुअली, तो यहाँ पर ये कहा जा रहा है कि like individuals जो हैं when they are produced from two parents, okay, like your mom and dad, जैसे आपके माता और पिता के ज़रिए अगर कोई ऑफस्प्रिंग आ रहा है, लाइक एग्जाम्पल आप आ रहे हो, तो आपके कुछ कैरेक्टर्स तो होंगे आपके मॉम और डैड के जैसे. जैसे शायद होगा आपका आई का कलर होगा, या फिर आपके बाल का टेक्सचर होगा. टेक्सचर इन द सेंस स्ट्रेट होते हैं कुछ लोगों के बाल, कुछ लोगों के बाल कर्ल होते हैं, जैसे कि मैंने कल के वीडियो में कहा था आपसे, राइट. तो वैसे तो ये कह रहे हैं कि रिप्रोडक्शन में क्या हो रहा है, न्यू इंडिविजुअल्स प्रोड्यूस हो रहे हैं, या उनके कैरेक्टर्स जो हैं सिमिलर होंगे, या तो कुछ थोड़े बहुत चेंजेस होंगे, मतलब थोड़ा बहुत डिफरेंट होगा उनमें. तो ये वाला ये जो है ये कंसिडर करेंगे हम फर्स्ट पॉइंट को. ओके, देन वी हैव डिस्कस्ड हाउ सम अमाउंट ऑफ वेरिएशंस इज प्रोड्यूस इवन ड्यूरिंग असेक्सुअल रिप्रोडक्शन. सो ऑब्वियसली अभी हमने देखा कि अमीबा में क्या हो रहा था, एक सिंगल पेरेंट था, तो when it divided, so there were two offsprings, in the sense two daughter cells, okay, आप ऐसे बोल सकते हो. तो two amoebas, so both the amoebas were like how they were identical, right? So जैसे थे वैसे ही थे, जैसे parent था वैसे ही वो दो भी थे,
तो उसी प्रकार के ये जो सेंटेंस है. सो सेकेंड, आई होप यू हैव क्लियर विद द सेकेंड पॉइंट. नाउ next we have, and the number of successful variations are maximized by the process of sexual reproduction. So what they are saying is the number of successful variations means like what variations you can say, a bit variations. जैसे कि मैंने कहा कि आई का कलर हो सकता है और इट कैन बी टेक्सचर ऑफ हेयर. यू माइट ऑल्सो आस्क द क्वेश्चन, आपके पास ये भी एक क्वेश्चन होगा, डाउट होगा कि कुछ चिल्ड्रंस के आई का जो आईरीज या कलर आप जो बोलते हैं वो सेम नहीं होता है. लाइक यू माइट हैव सीन इट विल बी डिफरेंट. सो how it is, that is also a reason, though the mother and the father have different iris color but the child will have something else. So that concept comes under the topic that is about the, we'll discuss about the 3 laws, right? Laws of independent assortment, segregation and all, dominance and all. There you will come to know what it is. Okay, so this is, I hope this concept is clear for you now, right? अभी नेक्स्ट हम क्या देख रहे हैं कि हम इस वाले पॉइंट को देख रहे हैं. इफ़ यू ऑब्जर्व अ फील्ड ऑफ शुगर केन. सो यहाँ पर क्या एग्जाम्पल दिया जा रहा है आपको, तो मैं बता देती हूँ. लाइक जैसे कि हम शुगर केन देख रहे हैं. शुगर केन मतलब क्या होता है, गन्ना होता है, या तो आप जिसको क्या बोलते हैं, लाइक जिसे हम लोग शुगर केन का जूस पीते हैं ना, वैसे गन्ने का जूस कहते हैं हम हिंदी में उसको. तो वो ईख, ओके, प्योर हिंदी में ईख होता है. सो जैसे ईख या गन्ना या जो भी शुगर केन होता है, अगर आप शुगर केन के फील्ड में जाएंगे तो आपको क्या शुगर केन अलग अलग दिखता है. ऑब्वियसली वेरिएशंस नहीं पता चलेंगे, जो से सिमिलर ही लगता है वो दिखने के लिए, लाइक इट लुक्स सिमिलर, राइट. बट when you talk about a human being which is sexually reproduced organism, so you can give even example of any, even you yourself can be the example if you consider here. So almost, do you look exactly carbon copy of your mother or exactly carbon copy of your father? Highly not. You are different. So maybe the one character is from your mom, one character is from your dad. अगर ऐसे हैं, एक कैरेक्टर माँ के पास है, एक कैरेक्टर बाप के पास है, हमारे तो हमारे डैडी के पास है, तो क्या होगा, हमारे कैरेक्टर्स थोड़ी ही सिमिलर होंगे पूरे? ऑब्वियसली नहीं होंगे. तो वही ये कह रहे हैं कि अगर हम प्लांट में कंपैरिजन करें कैरेक्टर्स का, तो हमें पता नहीं चलेगा कि कितनी हद तक वो चेंज हो चुका है, वहाँ पर जीन्स चेंज हो चुके हैं, लेकिन दिखने में वो सेम ही लगेंगे, थोड़ा बहुत चेंजेस होंगे. अगर हम इंसान को कंपेयर करेंगे तो वहाँ हमें वेरिएशंस ज़्यादा दिखेंगे. ओके, लेट मी जस्ट रीड आउट टू यू दिस. ओके, द इंडिविजुअल प्लांट्स, बट in a number of animals including human beings which reproduce sexually, quite distinct variations are visible among different individuals. Okay, so I hope you understood this point. In this chapter we shall be studying the mechanism by which variations are created and inherited. The long-term consequences of accumulation of variations are also an interesting. So यहाँ पर जो point है, the long-term consequences and accumulation of variations are an interesting point to be considered. We shall be studying this under evolution. So we are dealing in today's class only about heredity. Okay, so that what I have marked right now, the point, you should not forget it because it comes under the evolution. ओके, आई होप यू अंडरस्टूड लिया. यहाँ तक आपको समझ में आ गया होगा, नहीं तो प्लीज़ नीचे कमेंट करके बता दीजिएगा. ओके, सो यहाँ पर क्या है, अक्यूमुलेशन ऑफ वेरिएशंस ड्यूरिंग रिप्रोडक्शन. सो कैसे कैरेक्टर्स अक्यूमुलेट होते हैं वो चीज़ें कही जा रही है. ओके, सो यहाँ पर आप देखेंगे आपके लेफ्ट साइड में तो एक फिगर दिया हुआ है. यहाँ पर क्या कह रहे हैं वो, अगर आप सिर्फ इमेज को देखोगे तो क्या कहा जा रहा है, लेट मी शो यू दिस. सो अगर ये पेरेंट है तो फर्स्ट जनरेशन में क्या हो रहा है, यहाँ पर जो है रेड हो रहा है, यहाँ पर ग्रीन हो रहा है. जो ये कलर का चेंज आप देख रहे हैं ये कुछ नहीं लेकिन वेरिएशन है. अगर हम ये टॉप के पार्ट को अगर हम हेयर मान लें तो हेयर का टेक्सचर अगर यहाँ पर स्ट्रेट होगा तो यहाँ पर जो है कर्ल होगा. ओके,
अगर हम यहाँ पर नीचे का जो टेक्सचर है अगर उसको हम कंसिडर करें तो कुछ भी हो सकता है, ओके। लेकिन यहाँ पर जो भी आपको कलर चेंजेस दिख रहे हैं वो एक जनरेशन से दूसरे जनरेशन तक इंक्रीज हो रहे हैं. Is it? No, it is increasing from one generation to another generation. Here it was only one variation in the fourth generation, but in the second generation, see, two variations are there, even here, okay, even here, and here there is only one. Okay, so what is these variations is happening? That is, it says that the variations are increasing from time to time. Meaning is what? Accumulating. In this generation there was no change. यहाँ पर कुछ changes थे नहीं. But when it came for this first generation, if you consider after your parents, then here there was only one variation. एक ही variation था. This variation is like that only. It is not going to change. जैसा है वैसे ही आपके parents में होगा. Okay, that same changes is accumulated, means it is retained in your parents. Now from your parents you are coming, so along with that one variation again few variation will come to you, like maybe your mother and from your father two variations together will come and you will be having two variations. Again from you, if any from you generation will come, obviously. Okay, so then two characters plus one character from you, again, so three variations. So like this will go on increasing. Okay, this is nothing but accumulation and transfer from parents to offspring characters, we can say. Okay, so let's come over here. Inheritance from previous generation provides both a common basic body design and subtle changes in it. मतलब क्या कह रहे हैं, प्रीवियस जनरेशन से, जैसे मैंने अभी वो डायग्राम एक्सप्लेन किया था, सिमिलरली यहाँ भी वही लिखा हुआ है. एक जनरेशन में कुछ चेंजेस होंगे तो वही कैरी ऑन होंगे, फिर एडवांस में कैरी ऑन होंगे, 1 से 2 होंगे, 2 से 3, 3 से 4, ऐसे इंक्रीज होंगे. नाउ थिंक अबाउट what would happen when this generation in turn reproduces. So obviously मैंने कहा था अगर आपके पेरेंट्स में एक ऑलरेडी चेंजेस है, अगर वो रिप्रोड्यूस करेंगे तो वो एक की जगह 2 हो जाएंगे. So that is what they are asking in this particular point. Okay, figure 9.1. Obviously we have seen this figure 9.1, that is here, let me read out. So would represent the situation if a single individual reproduces, as happens in asexual reproduction. If one bacterium divides, then the resultant 2 bacterium divides again. So this is here what they are considering is, here they are considering only one parent. Example they are giving is here, that is bacteria. So this is the shape of bacteria actually. Okay, but here they have given you in this way. So if it is a bacteria, so in the first generation the parents is having no variation. In the second generation there is variation, a bit variation again in the second generation, like this. So this is what they are saying here. So though it is a bacteria, if they are considering, what will happen if one bacterium divides, then the resultant 2 bacterium divides again. Obviously these resultant 2 bacteria will divide again, these two. This is 1, this is F2, this is F3. For your convenience I am saying like this. So ये पेरेंट है, पेरेंट से जो है फर्स्ट एक बैक्टीरियम के 2 पेयर निकल गए, उन 2 पेयर से फिर से वो रिप्रोड्यूस हो रहे हैं, वहाँ पर चेंजेस हो रहे हैं, तो वही कह रहे हैं वो. दे आर सेइंग यू दैट थिंग इटसेल्फ. ओके, then these would be only very minor difference. There will be very minor difference then generated due to small inoccurrence in DNA copies. However, if sexual reproduction is involved, even greater diversity will be generated, as we will see when we discuss the rules of inheritance. So we'll understand this concept of changes or accumulation when we study about the rules of inheritance. Okay, next we have, do all these variations in a species have equal changes of survival in the environment? So they're asking you a question, क्या अगर ये species में changes हो रहे हैं तो उनमें और उनके पेरेंट में और उनके ऑफस्प्रिंग्स में क्या सर्वाइवल के चांसेस ज़्यादा होंगे, किन में ज़्यादा होंगे?
पेरेंट्स में होंगे या ऑफस्प्रिंग्स में होंगे जिनके ऑलरेडी वेरिएशंस हैं, मतलब कुछ चेंजेस हो चुके हैं। तो ऐसे कुछ सवाल पूछ रहे हैं, लेकिन आपका जवाब यहाँ पर ये होगा कि ऑब्वियसली नॉट, मतलब इट्स नॉट पॉसिबल। लाइक अगर आपने देखा होगा या फिर इवन इफ यू हैव थॉट इट, योर ग्रैंडफादर और मे बी योर ग्रेट ग्रैंडफादर यू कैन से, वो जो है बहुत लाइक दे आर प्रीवियस जनरेशन्स, ओके, नॉट ऑफ योर जनरेशन, बट स्टिल अभी तक भी वो हेल्दी है, ओके, अभी तक भी उनमें वो एनर्जी है, एंथुजियाज़म भी होगा, एनर्जी भी होगी। कुछ लोग 100 तक होते हैं, कुछ लोग 110 भी चले जाते हैं, 99 भी चले जाते हैं। बट हम लोग कैसे हैं, हमारी जनरेशन या हमारे पेरेंट्स की जनरेशन में कैसे है, मे बी वो जब 60 रीच होंगे तो ऑलमोस्ट उनकी एनर्जी लो हो जाएगी, और कुछ लोग मर भी जाते हैं, राइट। और मरने का कुछ ये नहीं है कि इतनी एज पर मरना है, वैसे कुछ नहीं है, इट डिपेंड्स, God's wish. But still, the previous generation would have the death rate at 100, you can say, if it is 100. Next generation of your parent generation, it has come to 60. Okay, 60, 70, whatever it is. Then what about us? So that is maybe 50-50. Okay, 50-50 biscuit, don't remember that. Okay, so 50-50 here. So what does this actually mean? Meaning is, because your grandparents were 100%, there was no variations at all in them, so that's why they were surviving till there. And your parents are having few variations, so their death rate is that much. And again, your rate is a bit decreased, that's why your variation and your death rate will be different. Okay, so like this. So that is nothing but the survival, what we say. Obviously not depending, obviously not the answer is for the question what is asked over here. Okay, depending on the nature of variations, different individuals would have different, so they are saying based on the nature, different individuals will have different kinds of advantages. Bacteria that can withstand heat will survive better in heat waves, obviously, which will be where you will be, there only we can stay. ओके, जनरल एग्जाम्पल आई गिव यू हियर टू अंडरस्टैंड। तो यहाँ पर जनरल एग्जाम्पल देती हूँ। एग्जाम्पल यहाँ बैक्टीरिया का दिया हुआ है, क्या कह रहे हैं कि इट कैन विथस्टैंड हीट व्हेन सर्वाइविंग बेटर इन हीट वेव। अगर वो बैक्टीरिया जो है गर्मी में रहता है तो ऑब्वियसली उसे वही क्लाइमेटिक कंडीशन में वो सर्वाइव करेगा, वरना वो मर जाएगा। जैसे कि एक बैक्टीरिया जो हीट में रहता है, इन केस इफ़ यू आर टॉकिंग अबाउट अ बैक्टीरिया विच विल बी इन कोल्ड कंडीशन, सो अगर उसे कोल्ड कंडीशन की जगह हॉट कंडीशन प्रोवाइड कर दोगे तो मर जाएगा। ऑब्वियसली यहाँ सर्वाइवल रेट डिक्रीज हो गए इसके। किस बेस पे डिक्रीज हो गए? एनवायरमेंटल बेस के ऊपर डिक्रीज हो गए। एस नो लाइक दैट। इन ह्यूमन बींग्स एग्जाम्पल इफ आई गिव, समझ लीजिए कि हम जो है अभी कर्नाटक के कोई स्टेट में हैं। ओके, सो यहाँ पर जो टेम्परेचर है वो नॉर्मल है, ऐसा नहीं है कि कुछ बहुत ज़्यादा गर्म है या फिर कुछ बहुत ज़्यादा ठंडा है। अगर हम लोग यहाँ की जगह चलिए मान लीजिए एंटार्क्टिका में चले गए, पोलर रीजन में चले गए, तो क्या हो जाएगा? वहाँ के लोगों को हैबिट है कि वो सर्वाइव करते हैं, उनका स्किन टेक्सचर अलग है, उनका सर्वाइवल रेट अलग है, सब कुछ अलग है। अगर वही कंडीशन हमें वो बर्दाश्त करने की कैपेसिटी नहीं है, क्योंकि हमें वो वेरिएशंस नहीं है, तो हम लोग कैसे हो जाएंगे? 1 दिन 2 दिन 1 महीना 2 महीना सर्वाइव कर लें तो बहुत है। तो ऐसे वेरिएशंस होते हैं, और इन वेरिएशंस में एनवायरमेंटल फैक्टर भी बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट या मायने रखता है। ओके, सो नेक्स्ट वी हैव हियर 2 क्वेश्चंस, लेट्स डिस्कस अबाउट इट। So the first question is, if a trait A exists in 10% of a population of a asexual reproducing species and a trait B exists in 60% of the same population, which trait is likely to have arise earlier? So based on the percentage, very well you can understand trait A is 10% and trait B is 60%, meaning here the trait B or the species B will survive, is surviving from earlier, means more time. It has likely to have arise earlier because the percentage of the trait is 60 here, and the
A इज़ 10%, मतलब क्या है, जो 60 का जो परसेंटेज है, मतलब ये बहुत सालों से एग्जिस्ट कर रहा है, इसलिए उसका परसेंटेज ज़्यादा है. ट्रेट ए क्या हो रहा है, शायद Okay, let me explain you those two questions. Okay, so here the first question you can see, that is asexual reproducing species and trait B. That means the first question, I guess. Okay, the first question in your book which was there. So the answer for that is trait B to have arise earlier as its percentage is more. And next thing is its explanation is there, that is trait B is likely to have arise earlier. In asexual reproduction, cell division results in the creation of similar cells with identical copies of DNA. So because of the identical copies of a DNA, the percentage of trait B, the trait what B is having 60%, that is existence earlier when compared to that of the species A. Okay. Next we have the second question, that was, how does the creation of variation in a species promote survival? So the answer for this is, variations help in coping up with the changes in the environment, hence variations promote the survival of the species. यहाँ क्या कह रहे हैं कि variations क्या करते हैं, helps in coping up with the changes in the environment. changes को जो है वो adapt करते हैं या फिर copy करते हैं, यूज़ करते हैं, यूटिलाइज करते हैं, जो एनवायरनमेंट में चेंज है उसके हिसाब से वो चेंजेस होते हैं. सो हेंस वेरिएशंस प्रमोट द सर्वाइवल ऑफ द स्पीशीज. अगर हम या फिर मैं जाकर एंटार्क्टिका में रहने लगूंगी तो कुछ दिन क्या होगा, मुझे तकलीफ़ होगी, शायद मैं अकेली नहीं, मेरी फैमिली से कुछ मेंबर चले जाएं तो क्या होगा, मे बी 1 or 2 वी विल नॉट एडजस्ट अकॉर्डिंग टू दैट एनवायरनमेंट. But next generation, the offsprings who will come, maybe they have that, they will develop that variations and they will come, they will take birth. So like that, this is the meaning, or this variations promote survival. So that is the explanation and meaning of it. So okay, I hope you understood. If you have any kind of doubt, please do comment. So do like the channel, subscribe it, try to share it as much as possible. And if you're just watching it, watch till the end. If you feel it's good. Okay, so till then, stay home, stay safe. Bye.